India is among the countries most vulnerable to climate change. As per the World Bank, it has one of the highest densities of economic activity in the world and very large numbers of poor people who rely on the natural resource base for their livelihoods. With all this, it becomes imperative to mitigate the environmental challenges by adopting various means and significantly transition towards a circular economy. In an effort to bring about this positive change, the Times of India, in association with Coca-Cola India, has come up with Replanet, a campaign that aims to delve into different aspects of circularity across several economic sectors of India. As part of the environmental campaign Replanet, policymakers and stakeholders came together to advocate the transition towards a circular economy. The experts have so far participated in 4 state chapters that were held in Hyderabad, Lucknow, Kolkata and Ahmedabad. Let's get a glimpse of the keynote address and panel discussion that were held during the Hyderabad edition of Replanet. I'm very glad to be a part of this Replanet initiative of the Times of India, with very specific focus on water and the importance of circular economy. This topic assumes a lot of significance, and there's a lot of topical significance with reference to urban areas. And me being the Urban Development Minister, I also wanted to share with you a few things that we have attempted, and a few things where we have succeeded, and also areas where we are still working on in terms of ensuring that our cities, which have turned into heat islands and have become single biggest contributor to carbon emissions, have to be tackled. And this is something that I say not just as a Minister for Urban Development, but also as a very concerned citizen and as a concerned father who's worried about the future generations as well. As we all understand, as we all know, cities across the world, not just in India, have become the economic engines, propelling our growth stories across the universe, across the planet. Now, if you just look at India, or if you look at Telangana for that matter, more than 45% of Telangana's GSDP actually comes from Hyderabad and the suburban areas of Hyderabad. Same is the logic for every single nation across the world. And cities have become magnets for investment. Cities have become magnets for migration, urbanization, primarily because, people migrate to cities in search of better livelihood opportunities, better education facilities, better healthcare facilities. In general, better living standards is what they come in anticipation of. So let's begin the panel discussion. My first question to Mr. Jayesh Ranjan, because he is there at the top of policy making. What does the circularity means for Telangana and Hyderabad? How important or significant is that for the state and the city of Hyderabad? I'm positive that in days to come, states will be eliminated or excluded from new investments if they don't really put together a very progressive policy which actually also is implemented on the ground, because this is something which people speak about India, that great policies are made but very little action happens on the ground. So things have changed now. The seriousness with which ESG is being viewed and circularity is something very important. Now e-waste also, that the problems that e-waste is posing, in a few decades rather, if we don't really address it, it will become like another plastic problem. What is interesting in e-waste is like you can mine gold. So there's urban mining, it's called urban mining. But the question now is to Mr. Dana Kishore, because people want to mine e-waste because there's gold. But why do they want to mine water, sewage water? What is there in it? Because we have examples from Amsterdam and Rotterdam, where water is also mined for phosphates. Phosphates is used for making fertilizers. So they're mining medicines also, and the pharma residues. So what is, which policies or department of, particularly water-related aspects, you are aiming at creating a sustainable circular economy? What are the objectives of the policies currently for the HMWSSB or Telangana government? Average per capita requirement for world average is 1,750 cubic meters of water is required. In India, it's around 1,400 cubic meters now.
Telangana is a little better because of all the recent last 7 years initiatives, 8 years initiatives of Mission Kakatiya, Mission Bhagirath. Availability of water has increased, but per capita remains same. It's a finite source. That's why where are you wasting water? How are you going to bring water back into circular economy? Because water industry is always seen as a kind of a linear economy. Bring it, use it, and waste it, or throw it. Can you bring the cycle back to, like, you said that reduce, reuse, and reimagine. I'd like to add a few more words. Regenerate, recover, resource recover. These are some more R's you need to add. Unless you bring the cycle back, like, we are utilizing about 2,270 million liters per day in Hyderabad. That's nearly about 227 crores of liter. And once you use water, you don't retain it. You let it out. And 80% of water, this ends up in environment of Hyderabad. That's about nearly 1,900 million liters. 190 crore liters of water is getting into, Musi practically. You need to mine phosphor. You need to mine fertilizers. We are all doing, to a certain extent, we are able to mine it. Let me tell you, biogas, we are going to about to get 1 crore rupees per annum kind of income now. From Nagol and Ambarapet STP plants, recently private investments have been called. They have invested. They're going to produce biogas and utilize it for your homes. That's one kind of mining water. I would like to ask Kalpana, so how significant is the role of the private sector in circular economy? Rainwater harvesting is often understood as a cookie-cutter solution. It is not a cookie-cutter solution. It's very, very site-specific. So this is something we bring to the table, and we have a team of experts, urban planners and architects today. But the private sector, which is the builder community, if they step in, the kind of impact that can happen is massive. And we've done stepwell restorations, connecting schools in the locality. We believe in local solutions. So Gachibowli, which is known world over for its IT industry, is named after this humble well. And we were able to connect the school simply because CSR faculties, I wrote more than 100 proposals, didn't come forward because it's connected to a masjid, it's connected to a religious institution. Then where do I go for the funds? Then instantly I reached out to the school where my kids studied, and they were more than happy to come forward to restore. So private sectors, they really play a role, and 2,000 kids from that school and 2,000 masjid goers, instantly some few thousand people got connected to this project. Madhulika, you have been successfully involved in restoration of lakes. So there's a nice case study of Naknampur Lake, and how did you create a circular economy around that place, and how important is public participation in circular economy projects, initiatives and approaches? It was in 1930s when we have industrialization, right? Then in 2000 we have itization. Now it's a time that we need environmentalization. Until unless we think on these particular notes, I don't think we will be going to achieve any kind of sustainable development on circular economy. Apart from that, when we do the restoration, when we talk about the sustainable word, then the maintenance is attached to it, right? So anything when we are taking up a project, we must think about how this particular project or the restoration has to be maintained. And then that part is somewhere we are losing. So thank you very much, esteemed panelists, and all of you who have come here, NGOs, CEOs, and it's a really great discussion, and we had a lot of points to that embrace the circular water economy, and hope Hyderabad and Telangana state would show future path for entire rest of the country to be the front runner like many other things in the circular economy around water. Thank you very much. The Lucknow chapter of Replanet was graced by Brajesh Pathak, Deputy Chief Minister, Uttar Pradesh, who gave the keynote address, and it was followed by a panel discussion. हम उत्तर प्रदेश के लोगों से कहना चाहते हैं कि टाइम्स ऑफ इंडिया की इस मुहिम में हम सब शामिल हों। हमारी आप सबकी जिम्मेदारी है कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम अच्छे पर्यावरण को छोड़ करके जाएं और किसी भी प्रकार से इस कुरीति को हम दूर करें।
सामान्यतः हम सब जानते हैं कि जैसे जैसे हमने प्रगति की तो अपने लिए हमने खुद व्यवस्थाएं अपने खिलाफ तैयार की। जैसे अभी आप देखते हैं कि ठंड का मौसम है, बाहर अगर 15 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पर नॉर्मल टेम्परेचर है, तो इसके लिए हमने वातानुकूलित संयंत्र का उपयोग किया। ये भी पर्यावरण के खिलाफ है। आप देखते होंगे बाहर 48 डिग्री टेम्परेचर है, हमने अपने लिए उसको टेम्परेचर 22 डिग्री का बनाया, 16 डिग्री का बनाया, ये भी पर्यावरण के खिलाफ है। ढेर सारी बिल्डिंगें बनी, आबादी जैसे जैसे बढ़ती गई। जब हम आजाद हुए तब 37 करोड़ के लगभग थे, अब लगभग उसकी तरफ 100 और जुड़ने जा रहे हैं, तो हमारे पास जगह कम पड़ रही है, तो हमने बहुमंजिली इमारतें बनानी शुरू की और ये सब हमने अपने खुद निर्मित किया है। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया की इस मुहिम से मुझे अच्छी तरह पता है कि ये जन आंदोलन खड़ा होगा। प्रदेश के 25 करोड़ लोग आपके साथ खड़े होंगे और इस जन आंदोलन को अंत तक पहुंचाने के लिए मैं भी आपके साथ कदम दर कदम चलूंगा। जहां भी आप कहेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में जाऊंगा, लोगों को इस बात को समझाने के लिए काम करूंगा कि सिंगल यूज प्लास्टिक हमारे जीवन के लिए, पर्यावरण के लिए खतरा है। और टाइम्स ऑफ इंडिया ने कोका कोला के साथ मिलकर के जो इस मुहिम को चलाया है, हम सब इस मुहिम में शामिल हों। When it comes to climate action, UP is going to be the game changer for India, and circularity is again going to play the foundation of this entire initiative of India, because and today it is really interesting to have people who are driving the demand for circularity, and it is also exciting to have people on stage who are facilitating the supply of circularity for climate action. So just to set the context of things, I would start with Mr. Singh, and as I pointed out, that your efforts led to UP bagging the top slot in the Swachh Vayu Sarvekshan, and you talk about waste segregation. So how do you look at waste as a solution to this problem of pollution, and how do you look at circularity as an enabler? एक एक वेस्ट के ऊपर बोलूँगा। जैसे CNT वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है, ये भी लखनऊ का 10% का कैटेगरी में है। इसको लिए हमने एक प्लांट 100 TPD का लगा दिया है। हमारे अभी 500 TPD का प्लांट हमें और चाहिए, तब जाके CNT वेस्ट खत्म होगा। जो अभी आशीष सर के पूरे लीडरशिप में हमने जो वायु सर्वेक्षण में लखनऊ ने नंबर 1 पाया है, वो बेसिकली सर की लीडरशिप में हुआ है। सर ने हमें गाइड किया किस तरह से करना है। आज भी अगर आप देखें, कल सुबह मेरा पहला फोन सर का ही था कि ये जो कूड़ा है हमें फिर इसमें देखना है, वेस्ट बनने को रोकना है। तो सर की अध्यक्षता में ये लिया है। तो अगर हम लोग ये CNT प्लांट पूरी कैपेसिटी में रन कर लेते हैं तो जितना भी कंस्ट्रक्शन का वेस्ट है वो सारे का सारा रिप्रोसेस होकर टाइल्स बन जाएंगे, मिट्टी सैंड अलग होकर दोबारा यूज कर लेंगे उसको, और उसकी कॉस्ट भी कम पड़ती है। तो ये हमें प्लांट अभी लगाने हैं। और जितना वेट वेस्ट है हमारा, जितना जो वेट वेस्ट है, जो हमारा गीला कूड़ा है, गीला कूड़ा जो है 800 से 900 टन निकलता है शहर में। इसके लिए MOU साइन हुआ है हमारा, ये इन्वायरो इंजीनियरिंग करके है, जो हमारा 200 से 500 टन गीले कूड़े से बायो CNG बना देगी। 2 साल लगेंगे उस प्लांट को लगने में। MOU हो गया, लैंड आइडेंटिफाई हो गया, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने वाली है भूमि पूजन के बाद। तो 500 टन हमारा कूड़ा वहां से CNG बनेगा, और CNG की गाड़ियों को बढ़ावा दे रहे हैं अपने नगर निगम में भी, सिटी ट्रांसपोर्ट में भी आएगी, इलेक्ट्रिक भी आएगी, लेकिन CNG रहेगी। तो वो सारा एक सर्कुलर, जो आपने कहा सर्कुलर अर्थव्यवस्था है, उसमें हम लोग उसको ले आए। ये एक विजन के तौर पर मैंने जो बात कही है। ये जो सिंह साहब ने जिस तरीके से बताया इनिशिएटिव जो लखनऊ नगर निगम ले रही है और जो इंस्टीट्यूशनल एफर्ट्स करे जा रहे हैं, एंड दिस टेक्स मी टू यू शिखा। तो स्क्रैपशाला इस वक्त 10 से ज़्यादा कैटेगरीज ऑफ ड्राई नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट में डील करता है, और हम इन्हीं सारे वेस्ट में कुछ फ्रेश प्रोडक्ट्स मिलाकर प्रीमियम प्रोडक्ट्स बनाते हैं, होम डेकोर, लाइफस्टाइल, गिफ्टिंग और फेस्टिवल ऑल्टरनेटिव्स का। फॉर एग्जांपल रक्षाबंधन आता है तो हम प्लांटेबल राखीज़ बनाते हैं, दिवाली आती है तो हम ऐसे दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर्स में हम ऐसे डेकोर आइटम्स बनाते हैं जिनको 2 दिन के सेलिब्रेशन के बाद जब डिस्कार्ड किया जाए तो वो एनवायरनमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट ना क्रिएट करें। रिजवी साहब बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग इनिशिएटिव करते हैं। ही इज़ इनटू द बिजनेस ऑफ यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट एज अ फॉसिल फ्यूल ऑल्टरनेटिव, विच इज़ रियली काइंड ऑफ अ गेम चेंजर। अगर जिस तरीके की एनर्जी सिक्योरिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, पूरी ग्लोबल इकोनॉमी एनर्जी सिक्योर, आजकल पूरा यूरोप यूक्रेन वॉर के बाद से जूझ रहा है एनर्जी सिक्योरिटी को लेकर और फॉसिल फ्यूल को लेकर, इतने इश्यूज़ हैं। और ऐसे में अगर हमारे देश में प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ करके अगर हम फॉसिल फ्यूल ऑल्टरनेटिव्स बना रहे हैं, तो विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। व्हाट काइंड ऑफ पॉलिसी चैलेंजेस यू फेस इन
taking this or scaling this business further, and what are your views on this? See, पॉलिसीज़ सेंट्रल गवर्नमेंट ने बहुत पॉलिसीज़ बनाई हुई है, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से भी पॉलिसीज़ है इसको रिड्यूस करने के लिए, और इसमें जो मेन फोकस है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक के ऊपर है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक ऑलमोस्ट 5% टोटल प्लास्टिक जो जनरेट होता है उसका करीब 5% to 7% सिंगल यूज़ प्लास्टिक होता था। अभी भी जो इसके मेन पोल्यूटर हैं, जो I'll say that वेस्ट प्लास्टिक जनरेटर अगर हैं वो पैकेजिंग कंपनी है। जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं वो पैकिंग में आते हैं, प्लास्टिक की पैकिंग में। प्लास्टिक एक वो प्रोडक्ट है जो पैकिंग का अल्टीमेट प्रोडक्ट है, कोई उसका कोई सोल्यूशन नहीं है, ना उसका कोई अल्टरनेट है। अभी अगर हम लार्जर स्केल पे देखते हैं तो हमने जो एक अपनी तरफ से एक मैकेनिज़्म बनाया कि वी डेवलप अ टेक्नोलॉजी कॉल्ड पॉलीमर एनर्जी टेक्नोलॉजी, जिसमें प्लास्टिक को ना वॉश करने की ज़रूरत है, सेग्रीगेट करने की ज़रूरत है, ना ड्राई करने की ज़रूरत है। एज इट इज़ वो प्लास्टिक हमारे रिएक्टर में डाल दिया जाता है एज एन इनपुट, एंड द प्रोडक्ट विच कम्स आउट इज़ वन इज़ फ्यूल ऑयल जो कि कॉमर्शियल वैल्यू होती है उसकी। देन वी हैव LDO, लो डीजल ऑयल। इसी प्रोसेस में हमारे यहाँ पे बुटेन एंड प्रोपेन गैस भी पैदा होती, और वो सेम गैस हमारे प्लांट को रन करने के लिए काम आती है। प्लांट जो हमने डिज़ाइन किया था वो सोलर पैनल्ड है, सो इट्स एब्सोल्युटली एनर्जी एफिशिएंट। मैंने जो मॉडल बनाया है, जो ये प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन का मॉडल या प्रोसेसिंग का मॉडल, उसमें मैंने सरकार के लिए या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए रेवेन्यू शेयरिंग का भी मॉडल बनाया है कि अगर जितने भी प्लास्टिक कलेक्ट होंगे सिटी के अंदर से सर, उसका 2% जो रेवेन्यू है वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को जाएगा। सो अगर हम लार्जर स्केल की इसकी बात कर रहे हैं, जिसमें हम अगर प्लांट लगा रहे हैं मान लीजिए, तो ये तो श्योर है कि 2 करोड़ रुपए पर ईयर नगर निगम को इसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से मिल जाएंगे सर। दैट इज़ अगेन अ रेवेन्यू टू build the better infrastructure, to help to build the better infrastructure in collection model, or to solve this plastic menace. मेरे ख्याल से यहाँ पर बात सर एक और जो उभर के आती है वो ये कि सवाल तो है कि इंडिविजुअल लेवल पर क्या किया जा सकता है, और अगर इंस्टीट्यूशनल लेवल पर देखें तो एक ये बिहेवियर चेंज इशू है। तो इसको इंड्यूस करने के लिए सर गवर्नमेंट की ओर से आप लोग का कोई इनिशिएटिव है कि कोई ऐसी कैंपेन चल रही है या चलाने का इरादा है, या और इंडिविजुअल्स क्या कर सकते हैं अपने लेवल पे, इस पे आप बताया। तो एक तो इंडिविजुअल लेवल पे सबसे पहला काम, अपने घर पे 3 बिन रखिए और वेस्ट को सेग्रीगेट करिए। और अब तो ऐसी भी टेक्निक्स आ गई हैं, ऐसे कल्चर्स बाज़ार में हैं कि आप किचन वेस्ट से अपने घर में एक तरल खाद बना सकते हैं। मैं अपने घर में बना रहा हूँ, वो उसमें यूरिया कंटेंट 55% होता है, मेरे यहाँ गमलों में वही खाद डलती है। दूसरा, यदि आपको सर्कुलरिटी इंश्योर करनी है इंडिविजुअल लेवल पे, लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के आप गूगल पे जाके कौन कौन सी प्रैक्टिसेस हैं उनको डाउनलोड कर लीजिए। हम लोगों ने एक मोबाइल ऐप बनाया है, बी कार्बन न्यूट्रल, गूगल प्ले स्टोर पे अवेलेबल है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। वो आपका कार्बन फुटप्रिंट कैलकुलेट कर लेगा और आपको बताएगा कि आपको क्या क्या करना है। ये तो हुआ इंडिविजुअल लेवल पे। और ग्रुप हाउसिंग यदि आपका मल्टी स्टोरी है तो आप लोग मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। और वैसे भी वो नियमों में भी है, बल्क वेस्ट जनरेटर को ऑन साइट कंपोस्टिंग करनी है। बैटरी यदि आपके यहाँ निकलती है, आप उसको रजिस्टर्ड रिसाइकलर को दीजिए, कभी भी किसी अनरजिस्टर्ड एरिया में आप मत दीजिए। रिफ्यूज़ वाला सिद्धांत थोड़ा हम लोगों को लाना पड़ेगा, तभी गलत काम हमारे समाज में बंद होंगे। अगर हम लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट के मंत्र को ही बस फॉलो कर लें तो मुझे लगता है गवर्नमेंट और पॉलिसी मेकर्स का काफ़ी काम आसान हो जाएगा और एक बहुत शानदार इकोसिस्टम बन सकता है जिसमें डिमांड और सप्लाई साइड में अच्छा बैलेंस बनेगा, तारतम्यता आएगी। तो विद दिस होप दैट वी आर moving to a future which is full of life, which as per the definition of our Prime Minister, lifestyle for environment,
I would thank my panelists for such an enriching discussion, which was very insightful. And I am also thankful to the audience, जो काफ़ी patiently हम लोग को सुनते रहे. And let's hope for a greener future. Thank you very much. Experts present during the Hyderabad and Lucknow chapters of Replanet not only delved into the questions surrounding the mass adoption of circularity, but also painted a well-integrated picture of the resource economics India presently has. In the next episode of Replanet, we bring you more key conversations advocating the need of a speedy and mass-level adoption of the new world of circular economy. Stay tuned.